So, hello, all of you, welcome back. Namaste. In this particular lecture, we are going to study about strings. Yeah, I know I have just I have just created more than 2 to 3 videos on this same topic, but in this particular, we're going to play around string, and we are going to learn something very nice thing. Okay, very nice means you're gonna enjoy it. Okay, so without wasting time, let's jump into the topic. So here, what I'm going to do here, I just created one variable. Okay, you can see this on screen, alpha. Okay, I have written all smaller cases alphabets in that string, and that string is given to that variable called as alpha. Okay, that's easy. Now, what I will do, I will do here indexing. I hope you have seen my previous videos, like it was about 10 to 12th video that I have explained their indexing in strings and other aspects of string. All the things that we have studied till now is going to help in this particular video regarding strings. Okay, indexing string, whether it is methods on string, whether it is what we can say other applications on string data type, all gonna be useful in this today's lecture. This is going to be more complex and more playful and more enjoying. Stay with me, okay? So here I have just declared this small alphabets to the one variable called as alpha. Now what I'm going to do, I will uh, I will going to index out. I have declared one more variable I equals to 10, and what I want alpha of 10. What does that mean? I am calling out the position, 10th position of this variable. Okay, the 10th position character of this string. Okay, so as easy as that. So 10th position kiski hai? You know, indexing in string starts from 0. Okay, so here A will hold index as 0, B will hold index as 1, C will hold index as 2, respectively. So a 10th index kiska hoga? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. K ka. Let's see it prints K or not, or it just give us output something else that we did not expect it. Let's see it. So before that, before the compiler is taking its time, I want to explain you some things like you must know what are the modulo operator is. I have explained about it. It gives us reminder. Okay. So when, yeah, we got our expected output, that is K. So I was on what modulo operator. Okay. Modulo operator gives us, when we does division, it gives us not a quotient, but it gives us a reminder. Yeah, reminder. So when I divide 25 by 26, what will be the remainder? I know this division is not possible without taking an decimal point in the quotient. But what will be the remainder in that case? It will be 25 only. Okay. When you divide some smaller number by bigger number, the first remainder will be the number itself. Because you do minus by 0.0, and the same number will be repeated. Okay. So that's the basic mathematics that you have studied in your school. Okay, so that's not a point here. I was just revising you about the model operator. If I divide a number greater than the divisor, so let's take dividend here, something about what we can say, more than 26. Let's say 27. So remainder will be, of course, 1. Output is here. So that was revision about quotient. So how it's going to help us in this lecture? Okay, you might have question that. Trust me, it's going to be too fun. Okay, in this lecture. So here, what I'm doing. I have printed print alpha of I, that I is equal to 10. Alpha of 10 is means what is the position of 10th index in that alpha variable is k value, k character. So k is getting printed here. Like that, if I print alpha of I, again alpha of 10, then alpha of I plus 1 means alpha of 11, 12, 13. What is getting printed? Yeah, it's getting printed the next character, the next index. Okay. If the k is present at 10th index, so obvious L is to be present at 11th, M is to be present at 12th, N is to be present at 13th index. Okay. But what if our I value is greater than 25? Okay. हमें तो पता है यार कि अल्फाबेट्स तो 26 कैरेक्टर्स होते हैं, मतलब इंडेक्सिंग उनकी 0 to 25 होगी. बट अगर 25 से ज्यादा हो गया तो मतलब हमने प्रिंट करने को दे दिया उसको कि प्रिंट, मतलब उसके पास तो सिर्फ 25th इंडेक्स तक ही अवेलेबल है, बट मैंने उसको बोल दिया कि तू प्रिंट कर भाई 26 इंडेक्स. तो उस टाइम पे क्या करेगा वो? ओके, लेट्स सी क्या करेगा वो. ओके, आई विल जस्ट राइट इट हियर ओनली. आई विल राइट इट. Let me make a separate window for it. We can say separate category for it. Let's see print. What I will see, I will write here print alpha of I
where I is equal to 25. Okay, I will take directly 25 here, uh, and not 25, more than 25. Okay, let's take 26 here. Okay, that's good. Wow, error. We are getting error. What's error? String index is out of range. Yeah. So what we have expected, the error has just shown us the same thing, that indexing is out of range here. That is, we have 0 to 25 index in this alpha variable. Okay. The alphabets are 26, so this is 0 to, and z will be 25th index. So after z, there is nothing. There is there are out of range. The indexing is out of range. 26th index is nothing like that in this alpha variable. So it is giving us error. That is obvious error. So how to fix this thing? That's why I have just actually revise you the model operator. We can fix that issue to using model operator. So far, so good. Let's continue now. So if I take I equals to 27 here, and when what I will do when 27 is divided by 26, what will be the output? Yeah, just listen. We modulo operator gives us reminder. Okay, so 27 divided by 26 will give us 27 modulo 26 give us 1. So what is alpha of 1 is going to be b. Listen clearly. What will happen here if I divide I, or we can say anything, any number below 20, we can say 25 divided by 6, what will happen? It will just circulate thing. If my index goes above 25, then it will automatically start with 0. Okay. So what is the next number after 25? It's going to be 26. When I will do 26 modulo 26, output will be going to be 0. So alpha of 0 is going to be a. So the things are getting circle. Everything's come back to you. Earth is दुनिया गोल है सब वापस एक ही जगह पे आते हैं. So that's the thing here happening. So I equals to 27 दे दिया मैंने. So 27 modulo 26 will be 1. Okay, and 1 is not a. Okay, 1 is b. Okay, 0 is a. The index value of 0, 8 index is 0, bit index is 1. Okay, that's easy. And I have just done here some operation. अगर तुम मॉड्यूलो 26 एज लोअर वैल्यू पे भी करते हो, लेस देन 26 वैल्यू या लेस देन 25, तो भी कुछ फर्क नहीं पड़ रहा क्योंकि सेम वैल्यू. तुम बताओ मुझे, मैं 25 मॉड्यूलो 26 किया तो 25 आया. एनीथिंग लेस देन 26 किया तो वही वैल्यू होगा. सो अल्फा ऑफ वही वैल्यू विल बी वही, क्या बोलते हैं उसको, वही character in that alpha variable. Okay, this is self-explanatory. Yeah. This is very easy to understand. I don't think there is need to explain it. Yeah, see, alpha of 1 will be b, and alpha of 14 will be 0. तुम ट्रस्ट नहीं करते ना मेरे को? अल्फा ऑफ 14 0 नहीं, सॉरी, अल्फा ऑफ 14 ओ आई करके नहीं करते ट्रस्ट. मैं बताता हूँ. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14. Ah, alpha of 14 is oh, oh my god. Yeah, okay, that's so. अभी इतना तो समझ गए अपन. ये फिक्स कैसे किया हमने इशू, अगर इंडेक्सिंग ज्यादा हो गई, आउट ऑफ रेंज चली गई, तो इस केस में अब थोड़ी बड़ी चीजों के साथ खेलते हैं. ओके, अब क्या करेंगे अपन? अब मुझे सेम चीज चाहिए. अभी मैं इंडेक्सिंग मेरा, अभी देखो मैंने आई को से 24 लिया, तो 24 प्लस 1 25. तो 25 मॉड्यूलो 26 गोइंग टू बी 25 ओनली, एंड अल्फा ऑफ 25 इज गोइंग टू बी z. And alpha of what after is going to be 24 plus 2, that is 26, and 26 modulo 26 is going to be 0, and alpha of 0 is going to be a and b. Obvious. Okay, this is also explained, self-explanatory. Then the nice things comes now. Okay, I will bet that you will enjoy this. Okay, I have just taken my name here first. You can take your name. There is no okay, ले सकते हो तुम तुम्हारा नाम भी, but मैंने मेरा नाम लिया सीधा. So what I'm going to do, I'm going to change this string, or we can say do one letter shift in this word विधान. ओके, वन लेटर शिफ्ट मतलब वी के बाद क्या आता है, मतलब हर एक कैरेक्टर को एक अल्फाबेट से शिफ्ट कर दिया मैंने. एप्टीट्यूड वगैरह प्लेसमेंट में भी शायद क्वेश्चन आ सकते हैं इसके, तो ये एल्गोरिदम याद करके जाना, नहीं ऐसा मत करना क्योंकि वहां पे तुम्हारे पास पीसी नहीं होगा. मैं एक बकचोदी कर रहा हूँ. फोकस टू द टॉपिक. ओके, सो एस इक्वल्स टू विधान, राइट. सो एक्सपेक्टेड आउटपुट क्या है मेरा? मुझे एक्सपेक्टेड है डब्ल्यू, इतना तो खराब नाम नहीं था मेरा. एक्सपेक्टेड आउटपुट है मेरा एक लेटर शिफ्ट के बाद WZEIBO. हाउ इट गेट्स प्रोनाउंस मैन, मैं प्रोनाउंस भी नहीं करेगा, छोड़. तो मुझे क्या चाहिए, एक्सपेक्टेड आउटपुट चाहिए मेरे को आफ्टर वन शिफ्ट. अब देखो मैं कैसे करता हूँ. चालू. अब मैं सबसे पहले क्या किया, एक एम्प्टी स्ट्रिंग डिफाइन कर दी. टी इक्वल्स टू एम्प्टी स्ट्रिंग. ओके, एक, इसको छोड़ो, इसको इग्नोर करो, अभी मैं बताता हूँ कैसे करना. जस्ट फोकस ऑन. अब
मेथड से आज आपको स्ट्रिंग मेथड जस्ट प्रीवियस लेक्चर में मैंने सिखाया था। ओके, सो व्हाट आई एम गोइंग टू यूज इंडेक्स मेथड हियर। तो मैं क्या कर रहा हूँ, मुझे क्या करना है उस पर डिपेंड है मैं क्या कर रहा हूँ। ओके वेट, तो मैं सबसे पहले क्या कर रहा हूँ यहाँ पे देखो। सबसे पहले मैं कर रहा हूँ, मुझे चेक करना है फर्स्ट लेटर ए आई एस में क्या लिखा है, विधान नाम का एक स्ट्रिंग से है। सो अगर आई मैंने जीरो डिफाइन कर दिया है इधर। ओके, अभी मैं क्या कर रहा हूँ, एस ऑफ जीरो पे क्या प्रेजेंट है, वी। अच्छा वी तो मिल गया। अभी बट मुझे क्या चेक करना है, ये जो वी है इसकी इंडेक्स पोजीशन इस अल्फा नाम के वेरिएबल में कौन से इंडेक्स पोजीशन पे है, मतलब वो जो वी है वो कौन से इंडेक्स पोजीशन पे है इस अल्फा वेरिएबल में। समझ रहे हो ना तुम, समझ रहे हो, समझ रहे हो, समझ रहे हो ना। ओके, क्या हो रहा है इधर मुझे बताओ। मैंने एस ऑफ जीरो किया, एस ऑफ जीरो मुझे फर्स्ट देगा। अच्छा, फर्स्ट कैरेक्टर ले लिया, अभी मुझे इसको वन शिफ्ट करना है। ठीक है, वन शिफ्ट करना इतना पता है, मैंने फर्स्ट कैरेक्टर ले भी लिया जो मेरा वी है। अभी वी मैंने ले लिया, पकड़ के रखा उसको। अब मुझे चेक करना है वी की पोजीशन अल्फा में कितनी है, कौन से इंडेक्स पे है। अब एक बार मुझे वो मिल गई इस मेथड से, स्ट्रिंग मेथड से अल्फा डॉट इंडेक्स, हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था इसके बारे में। अब मुझे उसकी पोजीशन वी की पोजीशन यहाँ पे मिल गई है, तो वो पोजीशन क्या है अपन देखते हैं, अपन प्रिंट करके देखते हैं, अपने पास बहुत टाइम है। ठीक है, अपने को पनवेल नहीं निकलना है कल, तो एक मिनट। क्या है अपने पास, 21। सो वी की पोजीशन 21 है। आपको लगता है 21 है, नहीं भरोसा नहीं करोगे। अब 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21, या वी की पोजीशन 21 है। ओके, उतना तो पता लग गया कि अभी अपनी जो अपने को चेंज करना है उसकी पोजीशन है 21, किसमें, अल्फा में। ठीक है, अभी अपने को पोजीशन उसकी पता लग गई, बट अपने को चेंज क्या करना है, उसके बाद वाला, उसके जगह पे उसका नेक्स्ट शिफ्ट लिखना है। मतलब वी के बाद क्या आता है, यू। अपने को यू चाहिए वी की जगह। यू के लिए मुझे क्या करना है, जो अल्फा में जो वी की पोजीशन है उसको +1 करना है, मतलब जो मुझे 20, जो कुछ भी लगा था 21, उसको +1 करना है, 22 करना है उस इंडेक्स को। मैं क्या करूंगा, सिंपल सी चीज है, सिंपल सी चीज है ब्रो। मैं इसको, ये मेरे को 21 देगा आंसर, ये अल्फा डॉट इंडेक्स, तो मैं इसमें ऐड 1 कर दूंगा, एज सिंपल एज दैट। हाँ, ऐड 1 कर दूंगा मैं। ओके, ठीक है, मैंने ऐड 1 कर दिया भाई। अब आगे क्या, ऐड 1 करने के बाद मुझे अल्फा में वो पोजीशन मिल जाएंगी जो मेरे को सेव करना है वी की जगह। पोजीशन मिल गई, बट मुझे कैरेक्टर कहाँ मिला, तो मुझे अल्फा ऑफ, मतलब अल्फा की इंडेक्सिंग करनी है मुझे यहाँ पे। सो मैं कर रहा हूँ अल्फा की इंडेक्सिंग। अच्छा, अब मेरे को मिल गया अल्फा ऑफ 22, दैट इज यू। अच्छा, यू तो मिल गया यार, बट यू लेके मैं क्या करूं, मुझे तो टी में डालना है ना। अरे उससे पहले, अगर भगवान ना करे ऐसा हो, बट अगर ऐसा हुआ तो, क्या कैसा हुआ तो, एक मिनट। यहाँ पे मैंने एक ये नहीं दिया है। देखो, मैं चेक कर लेता हूँ, ये इसका क्लोजिंग ब्रैकेट है, ये इसका, ये किसका क्लोजिंग ब्रैकेट है। हाँ, ये इसका क्लोजिंग ब्रैकेट है, एंड इसका क्लोजिंग ब्रैकेट मैंने नहीं दिया था। ओके, सो ऐसा लिखते समय मिस्टेक होती है, ठीक है, सॉरी फॉर दैट। नॉट, ओके। सो +1 मैंने दे दिया उसको अपना, ठीक है, नॉट एन इश्यू। मैंने +1 कर दिया। अभी उसके बाद क्या, अभी उसके बाद मेरे को एक तकलीफ आ सकती है, अगर इंडेक्सिंग 25 के पार चली गई तो क्या, हमने तो सीखा है मॉड्यूल ऑफ 26 कर दो। तो जो मुझे 22 मिला उसको मैं मॉड्यूल ऑफ 26 करूंगा पहले। ठीक है, ये मैंने उसको कर दिया मॉड्यूलो ऑफ 26। ये मैंने कर दिया ब्रैकेट क्लोज, ये ब्रैकेट इधर नहीं चाहिए, ये कर दिया मैंने ब्रैकेट क्लोज। विषय नहीं संभला जो। सो सो हाँ, तो ये मॉड्यूल ऑफ 26 ये होल को है ना, इसको है ना, पैरेंथेसिस मैटर्स ब्रो। ठीक है, ये ये पूरे को 26 है। ठीक है, यही कहना था। अभी क्या करें हम, अभी अपने को कुछ करने की जरूरत कुछ नहीं है। अभी अपने को, मेरे को अल्फा ऑफ 22 मिल गया, अल्फा ऑफ 22 यू है। अभी यू को मुझे टी में ऐड करना है, तो मैंने बताया था, I have told you in the first to fourth lecture that if you want to add something or concatenate something in the string, you will have to use only plus sign. पहले इस्तेमाल करें बाबू मोशाय, पहले इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो। सो दैट्स ऑल। इसको भी मैं, parenthesis makes our life easy। सो मैंने वी उसको ऐड कर दिया, यू उसको मैं ऐड कर दिया। अच्छा यार, तू तो सिर्फ वी के लिए किया है,
अभी आई जीरो है, ठीक है, पर आई वन भी तो चाहिए। आई मतलब आई को भी तो मेरे को चेंज करना है, तो मैं सिंपली क्या करूंगा, अगले टर्म में आई प्लस वन कर दूंगा, एज सिंपल एज दैट। आई को मैंने वन आई प्लस वन कर दिया। ओके, अब ठीक है, आई तो हो गया, फिर डी का क्या करें? ठीक है रे भाई, अपन आई प्लस टू कर देंगे। अ, ठीक है, सो सिमिलरली मैं अपने मेरे इसमें कितने लेटर्स है, वो आई प्लस फाइव तक वो जाएगा, ठीक है। सो आई प्लस थ्री, आई प्लस फोर, एंड हियर वी गो विथ आई प्लस फाइव। ओके, अभी पूरा विधान कवर हो गया मतलब विधान वर्ड कवर हो गया। ठीक है, अभी मैं प्रिंट टीवी कर रहा हूँ नीचे। नो इश्यू। कोई इश्यू बचा है क्या? हाँ सर, बचा है। कौन सा है? अगर मुझे वन लेटर शिफ्ट की जगह, प्लस वन किया है ना मैं इधर, अगर मुझे दो या तीन लेटर शिफ्ट करना रहा तो, अरे भाई पहले इसका आउटपुट तो देख ले, वन लेटर शिफ्ट के बाद क्या आता है। एक्सपेक्टेड या कुछ वजीबो है। ओह माय गॉड, ये तो ये यार एग्जैक्टली सेम है यार, ये तो मैजिक हो गया। अब तुम यहाँ पे कुछ भी पुट करो, तुम यहाँ पे तुम्हारा नाम पुट करो, इंडिया का नाम पुट करो, किसका भी नाम करो, तुम्हारे गर्लफ्रेंड का नाम पुट करो। हाँ, बट एक चीज का ध्यान रखना कि आई प्लस फाइव आई प्लस सिक्स करते रहना। जैसे मेरे इसमें फाइव इंडेक्स तक था, मतलब सिक्स लेटर्स थे, तो अब आपके इस नेम में हो सकता है 10 लेटर्स हो। सो यहाँ पे आई प्लस नाइन तक जाना। ओके, सो एज इजी एज दैट। ओके, सो इन दिस so now what we are going to do now, we are going to just make it print out, that is Vajio. अब मुझे अगर if I want to do some changes here, that is k equals to 4, so what I will do, I will just print here k, 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 and k one more time. So now I can change it many times as possible. So here I have taken 4 this time. I can take it as here 3 also. So now print is so I am shifting every character of that string by 3. So like first I have shifted that by one letter shift. So now I am shifting by 3. So if I do 3 shift of each character in that string, so क्या आता है, y l g k d q. So this is something else. So इसी चीज को in coding language we called as what we call as, it is called as popularly, okay, you can play around it, like it is a popular problem in many competitive exam also. Okay, this is मैं यहाँ पे लिख देता हूँ as a comment, this is popularly, P-U-P-U-L-A-R-L-Y, popularly called the Caesar, sorry for the spell mistake, the Caesar cipher in by cryptography. So that's was all. Yeah, cryptography means if you want to send some message to someone, and if you want to hide that message, that other person should not understand it, we look cryptography, that we just here done. Like I want to send this name Vidhan to someone person, but I don't want other person to understand what is written on it. So I will just shift that each letter word by one, and this, what we can say, code, row code, will be shared with the other person on that side. So that's all for this lecture. Thank you. Stay tuned. In in the next lecture, we will do how to make this repetitive stuff in one go. Okay, in coming lectures. Stay tuned with me. Thank you.